Bismillahirrahmanirrahim. Poem Daffodils composed by William Wordsworth, the poet of nature, class 9th, subject English, presented by Farah Shaheen. Vocabulary of the poem: wandered, walked here and there without purpose. Vale, wadi, valley, और wandered means बग़ैर मकसद के इधर उधर घूमना. Host, a great number, एक बहुत बड़ी तादाद. Fluttering, moving in breeze, हवा में झूमते हुए लहराते हुए. Fluttering, move in breeze. Milky Way, कहकशां, a bright belt of stars in the sky. कहकशां. Bay, a small part of lake or sea, एक दरिया या समंदर का छोटा सा हिस्सा, या उर्दू में खलीज. At a glance, a quick look, एक झलक, एक नज़र. Toss, rising and falling, ऊपर नीचे होना. सर, जैसे डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया है पोइट ने कि वो अपने सर ऊपर और नीचे कर रहे थे, झूम रहे थे. स्प्राइट, लाइवली, ब्रिस्क, खुश, ज़िंदगी से भरपूर. स्पार्कलिंग, शाइनिंग, चमकता हुआ. पेंसिव, थॉटफुल, गहरी सोच में. थॉटफुली, गहरी सोच से. ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ग्रेट जॉय ऑफ बीइंग अलोन, तन्हाई में खुश होना, तन्हाई में किसी चीज़ को एंजॉय करते हुए खुश होना. ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की खुशी. Stanza number 1. I wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. मैं अकेला घूम रहा था एक बादल की तरह जो कि तैरता है पहाड़ियों और वादियों के ऊपर तन्हा. When all at once I saw a crowd, जब मैंने अचानक एक झलक देखी एक भीड़ की, एक मजमे की. A host of golden daffodils, एक मजमा था, एक ग्रुप था सुनहरे डैफोडिल्स का. Beside the lake, beneath the trees, झील के किनारे और दरख्तों के नीचे. Beneath means under. Fluttering and dancing in the breeze, वो झूम रहे थे और नाच रहे थे ठंडी हवा में. Cool wind of morning is called breeze. Continues as stars that shine, जो जैसे सितारे मुस्तकिल चमकते हैं और उसमें रुकावट नहीं होती, रुकते नहीं हैं, इसी तरह ये सितारों की तरह मुस्तकिल चमक रहे थे. और ये जो है एज स्टार्स इज़ सिमिली, और इससे पहले हमने पढ़ा था एज क्लाउड, दैट वाज आल्सो अ सिमिली. एंड द daffodils were in a crowd, that was personification, that poet has presented the group of daffodils as a group of people, that is why it is personification. And trees and breeze is alliteration. When the lines are same, sounding same, that is called alliteration. Stanza number 2. Continues as stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continues as stars, ये चमक इनकी जो है सितारों की तरह थी, मुस्तकिल, वो रुक नहीं रही थी, चमक कम नहीं हो रही थी. और स्टार्स जो है यहाँ पे सिमिली है एज स्टार्स. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे सितारे जो है मिल्की वे में कहकशाओं में चमकते हैं, इस तरह से ये डैफोडिल्स चमक रहे थे. और ये नेवर एंडिंग लाइन, जो लाइन कभी ख़त्म होने वाली नहीं थी, उसमें फैले हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, और जो खलीज थी झील की, उसके साथ साथ उसकी कतार में ये लोग फैले हुए थे. 10,000 saw I at a glance,
and this is hyperbole. Hyperbole means that when poet exaggerates, and he's telling that he did not, he thought that the number of the daffodils was 10,000. 10,000 मैंने देखे एक झलक में. टोजिंग देयर हैज़ इन स्प्राइटली डांस, वो खुशी से नाच रहे थे और अपने सर ऊपर नीचे करके झूम रहे थे. स्टैंजा नंबर 3. द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड, उनके साथ साथ जो लेक की, जो झील की लहरें थी वो भी झूम रही थी. द वेव्स बिसाइड दैम डांस बट दे outdid the stars, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. वेव्स जो हैं, जो इसकी लेक की, झील की जो लहरें हैं, वो भी खुशी से डांस कर रही थी, लेकिन जो ये थे डैफोडिल्स थे वो खुशी में उनसे भी ज़्यादा चमक रहे थे. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. یہ چمک رہے تھے, لہریں چمک رہی تھیں, لیکن یہ ان سے بھی زیادہ چمک رہے تھے, اور اس منظر کو دیکھ کے خوش ہونے کے سوا شاعر کچھ کر بھی نہیں سکتا. یعنی کہ اس منظر سے اسے خوشی ہو رہی تھی, اور یہ کمپنی جو تھی بہت زیادہ لائیولی تھی, فل آف ہیپینس تھی. اس لیے آئی گیزڈ اینڈ گیز, میں اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا رہا, ٹکٹکی باندھ کے, نظر باندھ کے. بٹ لٹل تھاٹ, اور میں نے تھوڑا سا تھوڑی سی گہری سوچ کی. واٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ براٹ, اور اس منظر نے مجھے خوشی کی کیا دولت دی ہے, خوشی کی دولت مجھے کیا ملی ہے اس منظر سے. اسٹینزا نمبر 4. For off when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. اور جب میں اکثر اپنے صوفہ پہ آرام کرتا ہوں, لیٹتا ہوں, خالی موڈ میں, جب بالکل فارغ وقت میں, ان لیجر ٹائم, جب فارغ وقت میں ہوتا ہوں, دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی, اور وہ میری اندر کی آنکھ پہ ان کی جھلک چلنا شروع ہو جاتی ہے کسی فلم کی طرح. وچ از دا بلس آف سولیٹیوڈ, جو کہ تنہائی میں ایک بلس ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرح سے ہے. then my heart with pleasure fills, اور پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. and dances with the daffodils, اور ڈیفوڈلس کے ساتھ ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے. ہوم ٹاسک جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ رائٹ ڈاؤن ووکیبلری. آپ نے جو اس پوم میں نئی ووکیبلری جو آپ کے نے دیکھی ہے, جو نئے ورڈز ہیں, ان کو آپ نے لکھنا ہے, اردو اور انگلش سینونیمس دونوں میں. رائٹ ڈاؤن فگریٹیو ورڈز فرام دا پوم ڈیفوڈلز. اس میں آپ نے پوم میں جو بھی فگریٹیو لینگویج پڑھی ہے, جیسے کہ سیملی تھی, پرسونیفیکیشن آپ نے پڑھا, ایلیٹریشن تھا, اور ہائپربول تھا, تو یہ جو ہے آپ نے مینشن کرنے ہیں ایگزامپل کے ساتھ. اور کویشچن نمبر 1 آپ نے سالو کرنا ہے پیج نمبر 35 پہ. اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوم ڈیفوڈلز. تھینک یو ویری مچ.